हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। सो यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट किया जाने वाला है एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सबने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा अभी तक। सो हियर आई एम फॉर अ वेरी क्विक रिवीजन विद 50 MCQs for Commerce Paper 2 which are based on most important topics. So let's begin with the quiz. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऑप्शन ए सेक्शन 10, ऑप्शन बी सेक्शन 2D, ऑप्शन सी सेक्शन 3 और इज इट ऑप्शन डी सेक्शन 20। करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन बी, दैट इज सेक्शन 2D। Under Companies Act 2013, CSR is mandatory for companies with option A, turnover 500 crore and above, option B, profit 5 crore and above, option C, net worth 500 crore and above, or is it option D, all of the above? Correct answer यहाँ पर है option D, that is all of the above. अगर इनमें से एक भी condition met होती है, then CSR becomes mandatory for companies under Companies Act 2013. Market segmentation is carried out to option A, increase product variety, option B, satisfy all customers, option C, identify and target specific consumer groups, or is it option D, reduce promotion cost? करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन सी, दैट इज आइडेंटिफाई एंड टारगेट स्पेसिफिक कंज्यूमर ग्रुप्स। टाइप 1 एरर मीन्स ऑप्शन ए, रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी, accepting a true null hypothesis, option C, rejecting a false null hypothesis, or is it option D, accepting a false null hypothesis? करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन ए, दैट इज रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। The technique that measures the strength and direction of a linear relationship. ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऑप्शन ए रिग्रेशन, ऑप्शन बी एनोवा, ऑप्शन सी correlation, और इज इट ऑप्शन डी नन ऑफ द above? करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन सी, दैट इज correlation, because correlation measures the strength as well as direction of a linear relationship. In Walter's model, if R is greater than KE, the firm should option A, distribute all the earnings as dividend, option B, retain all the earnings, option C, follow random policy, और option D, reduce capital structure. So जब भी R KE से ज्यादा होता है, as per Walter's model, the firm should, the correct answer is option B, retain all earnings. इससे क्या होगा? The firm will be able to maximize the value of P, that is market price per share, क्योंकि जब भी R KE से ज्यादा होता है, retaining all the earnings is beneficial for the company. On the other hand, अगर KER से ज्यादा होता है, in that scenario company should distribute all earnings as dividend. So यहाँ पर हमें क्वेश्चन में given है R is greater than KE. So correct answer is option B, that is the firm should retain all the earnings. As per accounting standard 2, inventories should be valued at option A, cost, option B, net realizable value, option C, cost or net realizable value, whichever is higher, or option D, cost or net realizable value, whichever is lower. Correct answer is option D, cost or net realizable value, whichever is lower. Which of the following is not a feature of globalization? Options हमारे पास हैं, free movement of goods and services, option B, free flow of capital, option C, government control on trade, or is it option D, cross border collaboration? So इनमें से कौन सा फीचर नहीं है ग्लोबलाइजेशन का? नॉट जो यहाँ पर लिखा है वहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, फीचर पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा और गलत आंसर कर देते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग योर क्वेश्चंस इन द एग्जाम. हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ट्रेड is not a feature of globalization.
Which of the following is a limitation of ratio analysis? Options हमारे पास हैं ऑप्शन A useful for trend analysis, ऑप्शन B helps in inter-firm comparison, ऑप्शन C ignores price level changes, ऑप्शन D helps in decision making. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन C, that is it ignores price level changes. If EBIT is 2 lakh and interest is 50,000, financial leverage will be option A 1.33, option B 1.25, option C 1.7 और option D 1.89. करेक्ट आंसर यहाँ पर है सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है फाइनेंशियल लीवरेज का? द फॉर्मूला इज EBIT बाय EBT. हमें यहाँ पर EBIT गिवन है बट EBT गिवन नहीं है. EBT हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट फ्रॉम EBIT. So EBIT है 2 लाख रुपीस, EBT हो जाता है 2 लाख minus 50,000, that is 1,50,000. Now we need to divide EBIT which is 2 lakh with EBT which is 1,50,000, and 2 lakh by 1,50,000 is option A 1.33. Which capital budgeting technique uses time value of money? इनमें से कौन सी कैपिटल बजटिंग की ऐसी टेक्निक है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती है, यूज करती है? ऑप्शंस हमारे पास हैं पे बैक पीरियड, ARR दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेक्स्ट इज NPV दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. Correct answer here is option C, that is NPV which stands for net present value, क्योंकि ये method use करता है time value of money को for taking capital budgeting decisions. Which of the following is an exempt income under Income Tax Act? Option A agricultural income, option B lottery income, option C salary, or is it option D rent from house property? Correct answer यहाँ पर है option A, that is agricultural income, and it comes under section 10(1). Transfer pricing applies to option A domestic transactions, option B related party transactions, option C bank transactions, or is it option D all taxpayers? Correct answer यहाँ पर है option B, that is related party transactions. A product moves into decline stage of product life cycle when option A sales increase rapidly, option B market saturates, option C sales drop and profits fall, or is it option D product is introduced? Correct answer यहाँ पर है when sales drop and profits fall, that is option C. Main objective of Industrial Policy 1991 was option A nationalization, option B import substitution, option C liberalization and privatization, or option D trade restriction. So Industrial Policy 1991 का main objective क्या था? Main objective was option C, that is liberalization and privatization. HDI does not includes, इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो HDI इंक्लूड नहीं करता है? ऑप्शन A लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन B लिटरेसी रेट, ऑप्शन C GDP ग्रोथ रेट, और इज इट ऑप्शन D नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर यहाँ पर है GDP growth rate, that is option C. HDI does not includes GDP growth rate, whereas life expectancy and literacy rate are included under HDI. अगला क्वेश्चन है मैनेजमेंट से, which is span of control refers to option A number of managers in an organization, option B number of subordinates reporting to a supervisor, option C number of departments in an organization, or is it option D none of the above? करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन B, that is span of control refers to number of subordinates reporting to a supervisor. Formula for cost of equity under dividend discount model, also known as DDM. ऑप्शंस हमारे पास हैं D1 by P0, ऑप्शन B D1 plus G, ऑप्शन C D1 by P0 plus G, ऑप्शन D है P0 by D1 minus G. करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन C, which is D1 by P0 plus G. Internal audit is conducted by option A
external auditor, option B, external agency, option C, by company's own staff, or option D, SEBI. नाम से ही clear होता है because it is known as internal audit. It is conducted by company's own staff. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर हैं. ऑप्शन ए इक्विटी, ऑप्शन बी वेंचर कैपिटल, ऑप्शन सी टर्म लोन, ऑप्शन डी डिबेंचर्स. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, दैट इज वेंचर कैपिटल. The process of selecting a subset from a population is known as option A hypothesis, option B sampling, option C testing, or is it option D scaling. So जब आप एक subset select करते हैं from the whole population उसे कहते हैं option B, that is sampling. The correct answer is option B sampling. Next question, which is from capital structure. Capital structure decision is primarily concerned with option A investment in fixed assets, option B sources of long-term funds, option C dividend distribution, or is it option D working capital. So when we say capital structure उसका मतलब ये होता है we are deciding about कि हमारा जो long term fund होगा वो कहाँ से आएगा. That means the correct answer is option B. Capital structure means deciding about sources of long-term funds. Next question from marketing management. The question is branding helps in option A product standardization, option B price control, option C consumer loyalty, or option D controlling cost. Correct answer यहाँ पर है option C, that is consumer loyalty. Branding helps in consumer loyalty. A very basic question यहाँ पर जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा and I hope कि सबको इसका आंसर आता होगा. WTO was established in which year? Option A 1991, option B 1945, option C 1995, and option D is 2001. The correct answer here is WTO was established in the year option C, that is 1995, when it replaced GATT. Who proposed two-factor theory of motivation? Option A Kotler, option B Maslow, option C Herzberg, or is it option D P.F. Drucker? Correct answer यहाँ पर है option C, that is Herzberg. He proposed two-factor theory of motivation. Which of the following is a non-parametric test? Options हमारे पास हैं t-test, z-test, ANOVA, or is it option D, that is chi-square test? Correct answer here is option D, that is chi-square test, because it is a non-parametric test. Next question is concept of triple bottom line includes option A profit, people, process, option B profit, people, planet, option C people, product, promotion, or is it option D, that is price, profit and planet? Correct answer यहाँ पर है option B, that is profit, people, planet. Which ratio shows the efficiency of receivables management? इनमें से कौन सा रेशो ऐसा है जो आपको बताता है कि आपकी कंपनी में रिसीवेबल्स मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है? ऑप्शंस हमारे पास हैं ऑप्शन ए क्विक रेशियो, ऑप्शन बी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ऑप्शन सी debtors turnover ratio, or is it option D current ratio? Correct answer here is option C, that is debtors turnover ratio. Who is regarded as the father of scientific management? Option A Elton Mayo, option B F.W. Taylor, option C Henry Fayol, or is it option D P.F. Drucker? Correct answer here is option B. Yes, F.W. Taylor is regarded as the father of scientific management. Which of the following is a limitation of break-even analysis? Is it option A, it assumes constant selling price, option B, easy to understand, option C, considers fixed and variable cost, option D, it is suitable for short term? So correct answer here is इनमें से कौन सा एक limitation है break even analysis का? It is option A, that is under break even analysis we assume constant selling price.
Which law regulates foreign exchange transactions in India? Option A, FDI, option B, FEMA, option C, FERA, or is it option D, SEBI? So again I would like to advise you कि इन सबके full forms तो आपको learn करने ही करने हैं, and the correct answer here for this question is option B, that is FEMA. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सचेंज रेट सिस्टम वेयर वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. ऑप्शंस हमारे पास हैं ऑप्शन ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ऑप्शन बी मैनेज्ड फ्लोट, ऑप्शन सी गोल्ड स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी फिक्स्ड पैरिटी सिस्टम. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी, दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड एंड इट वाज यूज्ड अंटिल mid 20th century. Very simple question here we have. Equity shareholders are also known as option A owners, option B lenders, option C debtors or option D creditors. Correct answer यहाँ पर है option A, that is owners, because equity shareholders are also known as owners of the company. IFRS stands for option A International Finance and Reporting Standards, option B International Financial Reporting Standards, option C Indian Financial Reporting Standards, or is it option D Indian Finance and Revenue Standards? See, सभी options देखने में काफी similar हैं, so it can be very confusing while attempting the exam. So you need to be very clear for your answers. You need to be very clear about your concepts so that you're not confused in your exam. Correct answer यहाँ पर है option B, which is International Financial Reporting Standards. A very basic question we have from financial accounting here. The question is the matching concept in accounting ensures option A capital is equal to liabilities, option B revenue is equal to expenses, option C revenue is recorded when received, option D expenses are matched with revenues. So matching concept से आप क्या समझते हैं? The correct answer here is option D. As per the matching concept, or we can say because we follow matching concept, expenses are matched with revenues in financial accounting. Next question, market capitalization is calculated as, इनमें से कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसे यूज करके आप मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? जो फॉर्मूलेज हमें यहाँ पर गिवन है दे आर ऑप्शन ए टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी नेट वर्थ इनटू शेयर प्राइस, option C number of shares into market price per share, option D gross profit into market share. Correct answer हमारे पास यहाँ पर है option C, which is number of shares into market price per share. Next question, primary data is collected from option A published sources, option B journals, option C directly from respondents, or option D none of the above. So correct answer यहाँ पर है option C. When we collect the data directly from respondents, it is known as primary data. Next question is a subsidiary company is controlled by option A shareholders, option B directors, option C holding company, or is it option D promoters? Correct answer यहाँ पर है option C. That is a holding company, because a subsidiary company is controlled by the holding company. A person who draws a bill of exchange is known as option A drawee, option B payee, option C drawer, or option D banker. Correct answer यहाँ पर है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं इन ऑप्शन A and C. So the person who draws a bill of exchange is known as option C drawer. Proceeding towards next question, which is chi-square test is used for option A mean comparison, option B proportion testing, option C variance testing, or option D independence or goodness of fit. और यहाँ पर correct answer है option D. Yes, the correct answer is option D, which is independence or goodness of fit. Now this is a kind of bonus question, very simple. I suppose कि सबको ये question आता होगा. In SWOT analysis, T stands for option A trend, option B trade, option C technology, option D threat. And the correct answer here is obviously option D, that is threat.
I am very sure or I would like to suppose it that SWOT analysis का full form सभी बच्चों को आता है. S here stands for strength, W for weakness, O for opportunities and T is for threat. Corporate governance aims to protect the interest of option A, is it government? Option B, employees. Option C, shareholders. Or is it option D, that is debtors? So यहाँ पर correct answer है corporate governance aims to protect the interest of option C, shareholders. When a company issues bonus shares, it affects option A, cash balance, option B, authorized capital, option C, shareholders' wealth, or is it option D, share capital? So the correct answer here is option D, क्योंकि जब भी कंपनी इशू करती है बोनस शेयर्स, उससे कंपनी की शेयर कैपिटल अफेक्ट होती है, ना कि कैश बैलेंस, ना ही ऑथोराइज्ड कैपिटल और ना ही शेयर होल्डर्स वेल्थ. What is impacted by issuing bonus shares? It is the share capital of a company. Next question. Which principle of FEOL relates to fair treatment of employees? इनमें से कौन सा principle ऐसा है which is given by FEOL and it relates to fair treatment of employees in an organization? यहाँ पर जो principles हमें given है, they are option A, discipline, option B, unity of command, option C, equity, or option D, authority. And the correct answer is option C, because principle of equity suggests, or we can say relates to fair treatment of employees in an organization. Next question. The term LLP stands for option A, legal limited partners, option B, limited legal partners, option C, limited liability partnership, or is it option D, that is listed legal persons? LLP का full form होता है option C, that is limited liability partnership. Next question. IFRS is issued by, options हमारे पास हैं option A, ICAI, option B, SEBI, option C is IASB and option D is RBI. So first of all, आंसर बताने से पहले I would like to suggest you कि इन सबके full forms आपको learn करने हैं. जो भी abbreviations आप देखेंगे इस पूरे वीडियो में, make sure आपको सबका full form पता हो, because full forms भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं. और जहां तक बात है इस आंसर की, the correct answer is option C, that is IASB. अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रांसफर ऑफ रिस्क विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अकर्स इन ऑप्शन ए, बेलमेंट, ऑप्शन बी, प्लेज, ऑप्शन सी, सेल, और ऑप्शन डी, हायर परचेज. और यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज हायर परचेज. In break-even analysis, the contribution margin is option A, selling price minus fixed cost, option B, selling price minus total cost, option C, selling price minus variable cost, और option D, selling price minus profit. और यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन आप कैसे निकालते हैं, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर ब्रेक इवन एनालिसिस. अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज व्हेन ऑप्शन ए, आउटपुट इंक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन एज इनपुट, ऑप्शन बी, marginal output decreases as input increases, option C, total output decreases with input, और option D, production cost is fixed. यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, because law of diminishing return कब अप्लाई होता है, when marginal output is decreasing as input is increasing. So the correct answer is option B, marginal output decreases as input increases. So आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द डेट टू इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स ऑप्शन ए, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्शन बी, लिक्विडिटी, ऑप्शन सी, सॉल्वेंसी, और ऑप्शन डी, टर्नओवर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सॉल्वेंसी, बिकॉज डेट इक्विटी रेशियो इज अ टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो एंड इट इंडिकेट्स सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म.
So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. And don't forget to mention your scores in the comment section below. हमने आज 50 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं, सो जो भी आपका स्कोर है टेल मी इन द कमेंट सेक्शन.